This is the FM Gold channel of All India Radio. In the special bilingual program, we now bring you a discussion on pre-budget analysis on startups and MSMEs. The participants are economic analysts A.K. Bhattacharya and Amity Singh. Siddharth, journalist, initiates and moderates the discussion. In just around 10 days from now, Finance Minister Nirmala Sitharaman will present her second union budget. While a lot of attention is on whether she would give tax incentives and tax breaks to the middle class, large section of the population dependent on agriculture, on micro and small industries is looking at what is there in the budget for them. We will be discussing issues that are confronting the micro, small and medium enterprises in the country and what are the possible solutions that are in store and what are the expectations from the budget. The MSME sector is fairly large in India with around 63 million units, contributes about 45% of the manufacturing output and about 40% of exports. Its share in GDP is a little less than 30% and is a crucial sector in the entire scheme of things. What are the main stumbling blocks for this sector? And do we still need a separate classification for micro, small and medium industries? Well, I think you have touched upon the real core issue which affects the MSME sector at this point in time. It is true that the share in GDP is 35% or so. But if you look at the number of units in the country which are registered, they account over 97% of the country's total companies which are registered in the country. So therefore, if you are looking at this sector, you are looking at virtually every company. You take out the 3,000 companies which are large, the rest of the companies are all MSME companies. Now, how do you tackle the MSME problem? The MSME problem has been aggravated for two major reasons. 2016, there was demonetization, which dealt a shock to the MSME sector, and then came the goods and services tax. Compliance issues and the various implementation glitches have all contributed and increased the intensity of the problem for the MSME sector, which is also the single largest sector which produces jobs in this country. The issue about definition is critical because we do have a policy framework that provides concessional treatment, concessional policy approach to the MSME sectors. And this sector is very large. As you said, it is the micro sector is there, the small is there, the medium is there. So unless you take a completely radical view that you don't need any special policy dispensation for the MSME sector as such, that to my mind is the ideal solution, that if you want the MSME sector to grow and face competition and grow and diversify, then the time has come where you allow them to compete in the open market space, access to all available factors of production and raw materials, but don't give them any concessions so that there is an encouragement for them to stay small or medium or micro. If you do not want to adopt that radical solution, then I think it's time to come to look at what will you call a micro unit, what will you call a small unit, and what will you call a medium unit. It is time not to offer the same policy framework for all the three sectors under one umbrella. So I think that would be my suggestion at this point in time, because it is undergoing a major problem. And a lot of the economic woes that the country faces now can be tackled if the MSME sector is revived and helps address the job problem, the growth problem. And of course, there are many other issues of infrastructure, but we can talk about it later. अमिति जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, उनका कितना निवेश हुआ है प्लांट और मशीनरी में और इक्विटी में, उस पे आधारित है। इस पे सरकार फेरबदल करने की बात कर चुकी है। क्या ये मुद्दा काफी अहम है जिसपे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है? जैसा बता रहे थे भट्टाचार्य साहब कि उनको प्रोत्साहन देने के लिए कैपिटल की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार का जो ये प्रयास है, ये जो डेफिनेशन है, इसको जो बदलना चाहते हैं, ये कोई एक नया प्रयास नहीं है, ये काफी सालों से चल रहा है। लेकिन पहले जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते थे कि इतना डेटा अवेलेबल नहीं था। मतलब अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से उसको करना चाहे तो जिस तरह का डेटा चाहिए उस तरह का डेटा नहीं था, पर अब डेटा कलेक्शन और डेटा काफी इम्प्रूव हो गया है। तो अभी अगर हम सिर्फ टेक्निकलिटीज को देखें तो अभी पहले से ज्यादा पॉसिबल है कि हम इन्वेस्टमेंट को ना देखकर जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको हम लोग बेसिस बनाए फॉर कैटेगराइजेशन। जैसे कि मिस्टर भट्टाचार्य भी बोल चुके हैं कि ये जो पैरामीटर्स है, कई बार ऐसा होता है कि जो उद्योग है उनको फोर्स करता है कि वो छोटे ही रहे। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो सॉफ्ट हम लोग लघु उद्योगों को देते हैं
उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो फैक्टर है कि जो शॉप्स हैं जो फोर्स करते हैं, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट पे है, जैसे कि 100 लोगों के नीचे अगर आपका उद्योग है तो जो उद्योग का मालिक है उसको बहुत सारे शॉप्स मिलते हैं जो कि अगर 101 हो जाए, 102 हो जाए, फिर उसको नहीं मिलता। काफी लोगों ने रिसर्च भी किया है इस पर कि इसकी वजह से 100 का जो मार्क है बहुत सारे लोग उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। तो ये जो नया डेफिनेशन है जो अभी भी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, उसको देखा जाए तो वो ज्यादा लिबरल है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करें तो उससे ये वाला जो प्रॉब्लम है टू सम एक्सटेंट वो एड्रेस होगा। लेकिन उसके आगे भी हमको देखना चाहिए कि ये जो एमएसएमई का जो संपूर्ण जो पॉलिसी है वो एक्चुअली एमएसएमई को प्रमोट कर रहा है कि जो यूनिट्स है उनको छोटे रहने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, उस पर भी डीप एनालिसिस करना जरूरी है। अमिति जी ने जो कहा इसको और भी आगे बढ़ाना चाहूंगा। कंसेशन समाप्त करने का जो प्रपोजल जो है, मैं समझता हूँ एक दिन आप समाप्त कर देंगे तो ये एक डिस्ट्रप्टिव होगा, काफी हलचल मच जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उसको समाप्त करना है तो इसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 3 साल का एक रोड मैप दे दें कि पहले साल में हम ये करेंगे, दूसरे साल में हम ये करेंगे। ये फेज आउट प्लान अगर सरकार बजट में या बजट के बाहर भी अनाउंस करे, इससे कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो विभिन्न जो लघु उद्योग हैं या सूक्ष्म उद्योग जो हैं, वो उनको समझ आ जाएगा कि 2 साल के बाद हमें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो एक रोड मैप की बहुत सख्त जरूरत है। किस तरह से आप एमएसएमई सेक्टर को एक ग्रेजुएट कराएंगे पूरी तरह से एक सबल सक्षम एक इंडस्ट्रियल यूनिट के जगह। ये जो परिभाषा है इसमें इन्वेस्टमेंट के अलावा एक टर्नओवर को भी लाने की बात हुई है, तो यह कहाँ तक फीजिबल है? टर्नओवर को अगर आप एक परिभाषा का अगर मापदंड लेते हैं तो आपका जो पॉलिसी का फोकस है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। मान लीजिए 10 यूनिट के इन्वेस्टमेंट में अगर आप ऐसे यूनिट हो सकते हैं जिसमें 10 यूनिट के इन्वेस्टमेंट से आप 100 की टर्नओवर भी ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेक्टर्स। तो मैं ये समझता हूं कि ये परिभाषा जो है, ये समय आ गया है कि सेक्टर स्पेसिफिक परिभाषाएं तैयार किया जाए, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा कम होता है, पर सर्विसेज सेक्टर के अंदर अगर आप रेवेन्यू में करें तो मैं समझता हूं कि वो ठीक रहेगा। पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसमें मैं समझता हूं कि प्लांट एंड मशीनरी में ठीक रहेगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर परिभाषाएं के मापदंड अगर हम लगाना चाहें, मैं समझता हूं कि ये बेहतर होगा, बल्कि हर मर्ज की एक ही दवा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। So one size fits all is not the right approach. That is not the right approach. One of the major problems facing MSMEs is the stress that they have, the financial stress. If you look at the number of companies that are going for insolvency action under the new Insolvency and Bankruptcy Code is a very high number. And banks are also doing it in a very mechanical way. There has been discussion around having a special dispensation for MSMEs when it comes to handling stress. Is there a need for dealing with MSMEs differently, and how do you have a carve out in a law which is meant for everyone in the economy? Whole discussion on the stress fund, it is very valid because MSMEs do need a lot of hand-holding. But the thing is that, when we start a discussion, we are very slow in carrying it to its logical conclusion. We are talking about a fund, but, there is not much clarity on where this money is going to come from. Who will put the money there? How will it be dispersed? On what basis will they select? So I think a lot of work needs to be done in this area, and there is a need of such a fund because MSMEs are going bust and they would need some help. But at the same time, banks also have to realize that the main source of funding for MSMEs, especially with the NBFCs going down, so banks cannot step back just because the going is rough at the moment for the economy at large and MSME sectors in particular. If we look at the funding arrangement that the government has in place for startups, the fund of funds, although this large 10,000 crore fund was announced in 2016, but the disbursement has not been up to the mark. I think till some time back it was around 2,265 crores till October 2019. So I think because it is like almost the 4th year of the fund, so it is now really important for the finance ministry to also understand that since, an arrangement has been put in place, the fund has to come through so that even if venture capitalists, they are not that forthcoming in giving money to the sector, so at least the fund of funds should provide the kick that it was supposed to. I think that yes, the credit situation is bad. The MSME sector has been suffering, but it is the government's responsibility to actually handhold it and bail it out.
There were two funds which were proposed by the committee which had been set up by the Reserve Bank of India. One was a stressed asset fund. I think the corpus was about 5,000 crore which was proposed, and a fund of funds of 10,000 crores dedicated for the sector. How crucial is this funding gap in the sector which needs to be addressed? There is no doubt that what has been announced was well thought of, and its implementation would make a lot of difference. But I think efforts towards reviving the MSME sector by addressing the stress factor in it is an ongoing process. MSME sector is part of the current Indian ecosystem. You cannot have an approach towards the larger companies wherein you are looking at various measures, concessions, SOPs, providing funds, and the banking system is largely more geared towards them. But you need to make sure that the funding mechanisms available to the MSME sector is there, keeping in mind their kind of requirement. I would draw attention to two issues here. I think the MSME sector needs funding. There is need for these funds. But at the same time, there should be no attempt to provide funds with any forbearance of the existing banking rules. In a sense that this attempt to provide funds without collaterals or loans without collateral is something that deeply hurts the banking discipline and credit discipline in the economy. So therefore, the problem or the challenge would be how to provide funds to the MSME sector without getting into this moral hazard issue of providing them funds without collateral. The MSME sector is strong and vibrant enough to accept loans on competitive terms, but make sure that those loans are made available to them as long as they come up with a credible proposal. And the second thing would be that we need to see in what way the idea of the mudra loans can actually be made more popular and its reach can help a larger number of MSME companies. What we have seen is that the performance of mudra loans has been varied under three different categories. While it has been okay in terms of the middle and the second top category, but it has not been very good in the lowest category. So we need to create a banking system, credit availability system for the MSME sector, which does not dilute the principles of basic loans and credit discipline. Having said that, let me say that more than the financial support or the loans, I think we need to extend some of the principles that we have already begun following in the startup eco-space, which probably should be extended to the MSME sector. There is no reason why, if current policy allows a carry forward of losses for startup companies up to 8 years. Now this allows them tremendous leeway for a startup. There is no reason why an MSME company should also not get the same benefit. As a matter of fact, for the startup companies, there is a proposal is to extend it to from 8 years to 15 years. Now, the question is, why is it that the MSME sector should not get the same benefit as a startup company? So, if you want to give more emphasis on innovation or use of technology, by all means give that, but extend the same principle to an MSME sector also, so that they also feel that they can enjoy and grow with those benefits which are available to a startup company. Absolutely, because in both cases you have entrepreneurs who are risking their... Since we're on the issue of startups, there had been some niggling tax issues which had affected the sector. Has that issue been put behind us? Yes, the issue which is popularly called angel tax, it had been bothering startups for a very long time. And after several attempts, the finance ministry finally decided to do away with it, which has come as a big relief for the sector because it was a genuine problem that they were facing. While one problem has been sorted out, but another big issue which most startups talk about is the huge paperwork that startups have to engage in to basically prove that they belong to that sector and they should be getting all the SOPs that are reserved for them. So a large number of startups are single person enterprise or maybe 2 or 3 people at the most. So it is very difficult for them to keep a tab on everything that is required to be done and run around to get all the clearances and all. So although, while when we are discussing it, it might sound like an issue which, every enterprise talks about, but the ground reality is that it takes a huge toll on such small enterprises. And although the government keeps talking about this, they keep saying that they will look at
ways to cut down all these regulatory matters. And there was this big startup summit which happened in Goa some time back, in which Commerce Ministry also said that there would be a committee which would look at, how to basically sort these things out. I think one has to go beyond these talks, and these discussions with startups has to lead to some solid resolution. And maybe this year's budget could be the starting point for that. वित्त मंत्री जी ने टैक्स दरों में कमी अनाउंस किया था और उसमें जो नई कंपनियां आएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको 15% दर पर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो यह कितना अट्रैक्टिव होगा स्टार्टअप्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में घुसने के लिए? देखिए, आपने एक सही सवाल उठाया यहाँ पे कि अगर वो स्टार्टअप सर्विसेज एरिया में है तो वो तो इस पॉलिसी से बाहर हो गया है, क्योंकि ये जो 15% का जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, तो अभी एक मांग ये है कि आप क्यों न सर्विसेज में उसको एक्सटेंड करते हैं उसको। और एक मांग ये है कि आपने जो अभी 2023-24 यानी 3 साल का जो एक कंडीशन दिया था कि आपको प्रोडक्शन लाना है 2023-24 के पहले, तो काफी अब बातचीत चल रही है किस तरह से इस शर्त को थोड़ी बहुत शिथिल कर दिया जाए। पर ये रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात। जो स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उनको तो साफ है कि ये नई फैसिलिटी उनको मिलेगी और उनके लिए ये जो मार्केट में प्रोड्यूस लाना है या सर्विस लाना उतना डिफिकल्टी की बात नहीं होगी। पर स्टार्टअप की जो आपने बात छेड़ी, आपने स्टार्टअप सेक्टर में 2 बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जो एमएसएमई सेक्टर में भी लागू होते हैं। ये है कि आजकल जो नए एमएसएमई सेक्टर की नई नई कंपनियां आ रही हैं उसमें भी जो एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है वो अब काफी पॉपुलर आ रहा है, क्योंकि आजकल के नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए कंपनी खोल रहे हैं। 2 दोस्त अपने कंपनी खोल लिया उन्होंने, एमएसएमई में हुआ या स्टार्टअप में भी हुआ। पर वहां पे इस वक्त जो हमारी जो कानून जो है ईसॉप जिसे कहते हैं हम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसमें ये कहती है कि जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। बहुत दिन से ये एक डिमांड आ रही है कि इसको जरा और भी एम्प्लॉय फ्रेंडली क्यों ना किया जाए और भी एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली क्यों ना किया जाए कि जब आप उसको बेचेंगे तभी आप उसके कर का एक भुगतान करना पड़ेगा। जो वैल्यू रियलाइज करेंगे, जब रियलाइज करेंगे तब तक तो आपके पास तो सिर्फ कागज है और एक ओनरशिप पेपर है। तो बहुत बड़ी एक मांग ही समझ लीजिए आप। ये मेरे ख्याल से सरकार को इसके बारे में विवेचना करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये जो है ये मैं समझता हूं कि एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप के लिए, दोनों के लिए ऐसा एक कदम होगा जो शायद इस बजट को, अगर बजट सोचते इसके बारे में, इसको एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी एक कदम हो सकती है। और दूसरी बात जो है वो एक अद्भुत एक कठिनाई है कि जो कंपनीज एक्ट में एक आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 42 के अंदर ये कहा गया है कि एक स्टार्टअप कंपनी को कई कंडीशंस में उसको एक पब्लिक कंपनी का स्वरूप दिया जाएगा। तो वो एक पब्लिक कंपनी होने से वो एक स्टार्टअप की काफी एक डर का और भय का वातावरण पैदा हो गया है। मैं समझता हूं कि अगर स्टार्टअप जो इनिशिएटिव जो है इसको अगर हम और भी एक पुश करना चाहते हैं तो ये 2 चीजों को सरकार के इसके बारे में सोचना चाहिए। और बजट में अगर इसके बारे में कुछ विवेचना हो, कुछ बातचीत होगा, तो मैं समझता हूं कि बहुत एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि ये कदम एमएसएमई सेक्टर में ही लागू होगा। आर्टिकल 42 के अंडर सर्टेन कंडीशंस पब्लिक कंपनी होने का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके कंप्लायंस बर्डन ज्यादा है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूं ये आर्टिकल 42 ऑफ कंपनीज एक्ट को किस तरह से अमेंड या मॉडिफाई किया जाए जिससे कि जो स्टार्टअप और एमएसएमई कंपनियों को अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन में न पहुंचे हो, ये एक देखने वाली बात होगी। Amity, when it comes to startups, a lot of the startups that have come up are doing businesses which are already there in the West and they're developing an Indian model. Do these startups also need some incentives or a more vibrant ecosystem to develop India-specific products and have India-specific services? Government was at one point of time talking about this entire mentorship thing. So I think sometime last year, again, the Commerce Minister, he said that the government would support a mentorship scheme in which especially startups that you mentioned would get some kind of a mentor who has been around in the area for a long time, so that that person could basically help the startup to have a firm grip in the area where they are venturing to step out, since there is already a competition in that space. So I think if the mentors are given sufficient encouragement
to extend a helping hand to startups coming up in the country. I think that would be big practical help that the government could extend to the entire startup ecosystem. But just merely, talking about mentorship will not produce mentors. So there has to be some kind of an incentive scheme, something that would attract mentors to basically come up in big numbers that are required. And since we are discussing budget 2020, one point which comes to my mind is a very sensitive demand that the sector has been making, because funding has not been as much as the sector wants. So what they have now started eyeing is the Provident Fund, the EPF corpus, because what their argument is that since the foreign pension funds, they want to invest in the startups in India, why don't we utilize the large funds we already have in the country? But we all know that it is a very, very, like the entire thing of investing the hard-earned money of employees over a large number of years. It is a very sensitive issue, but then the DPIIT, it has assured startups that it would definitely think about it. And they were again talking about setting up a committee where there would be representatives from the Finance Ministry, the Corporate Affairs Ministry, from RBI, from SEBI. So they were supposed to set this up. I think it would happen very soon, but I don't know whether there is enough time to think this through and have a proposal in place for the budget. But this is also one very interesting area, and quite a bit of fund can be channelized from the pension fund if the government wants to. Does EPFO have the risk appetite to provide risk capital to a sector which is where mortality rate is very high? Well, I think touching the people's provident funds or savings, which is for many people is saving of last resort, will probably risking that capital for a venture which is inherently risky, because after all it's a venture. So probably EPFO funds should rather be invested in safe and secure instruments. If you use it for promoting a startup, which is a risk investment, so probably it will not be advisable at this stage when already stress level and EPFO's own finances, where it is relying a lot on the unclaimed deposits for paying the interest to the existing subscribers. So I think EPFO would not be a good way of providing financial support to the startup space. But there is no denying that the startup space needs a lot of infrastructure support. We often underestimate the importance of basic infrastructure like land, like easy availability of trained labor. Forget about capital. We have discussed capital and the banking facilities. So I think time has come where we need to think in terms of creating maybe more startup parks. If the country has got producing so many talented engineers, entrepreneurs from IIMs and IITs and NIITs, if there are available parks, startup parks, which can actually be a kind of a magnet point for trained workers, for the government agencies to be located there to provide a single window clearance to all the startups. So you need a startup ecosystem to encourage startups. So I would imagine that if you announce a certain number of new startup parks in the country, wherein startups will be encouraged, given benefits, there will be banks which will be located there. They may be close to maybe one of the IITs or NIITs or even the IIMs or other management schools. There is also a close correlation between the education sector as well as the entrepreneurship sector. So the startup park can actually tap into the energy and the creativity, the enterprise of IIT or NIT or IIMs, and transfer that into a startup park. So the government can play a role by having a single window clearance there. So we need to take the startup movement to a new level, and probably this is equally applicable, to my mind, to the MSME sector. When we're discussing MSME and startup, very often I feel that what is applicable and valid for a startup is also in most ways is valid also for an MSME sector, because all of them are actually dependent on trained labor, entrepreneurship, a big idea, and easy available finance. So I think for both MSME sector and the startup, we need to create some parks which can house these units and enterprises, and they can be located near some engineering institutes or management institutes, can actually be a good thing for the Indian economy. जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र होते थे वो पहले इसी तरीके से आए थे, साथ में ITI भी होती थी,
जिससे कि ट्रेंड मैन पावर उनको मिलता रहता था। पूंजी कितना बड़ा विषय है, क्योंकि विश्व के काफी बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स भारत में आए हुए हैं और पूंजी के साथ वह एक अपना अनुभव भी बताते हैं। लेकिन काफी सारी ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो कि कहीं पर एक लेवल पे ग्रोथ होने के बाद जो है वह दे फॉल बाय द वे साइड। तो इसमें मेंटरशिप की बात की अमिति जी ने, इसमें इस गैप को कैसे भरा जा सकता है? ये समस्या मैं समझता हूँ कि एक तो है कि जो नया आइडिया जो है स्टार्टअप का, वो आइडिया कितना प्रोडक्टिव रहा फाइनली। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर हम 2 या 3 अगर आइडिया लाते हैं, उसमें एक आइडिया फेल भी हो सकता है, तो हमें फेलियर की प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी और उसके लिए जो हमारी सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए विदेशी प्राइवेट इक्विटी जो आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल है, टैक्सेशन का सवाल है, वो है कि उनके कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की किस तरह से उनका प्रावधान किया जाए। वो मैं समझता हूं कि उस चीज में, ये आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहें या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहें या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, उसकी जो एक प्रोविजनिंग जो है, ये एसएमई सेक्टर के लिए और स्टार्टअप सेक्टर के लिए मैं समझता हूं कि उसमें और एक रिव्यू और एग्जामिन होना चाहिए, जिससे कि ऐसे पूंजी निवेश करने वाले लोग जो हैं, वो उनको ये डर न रहे कि हमने पैसा तो लगा दिया, पर हम जो कैपिटल लॉस हुआ और गेन हुआ, उसको हम किस तरह से इसका ज्यादा फायदा उठा सकें। इस वक्त एग्जिट का जो एक समस्या आती है, वो एंट्री के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों एंट्री और एग्जिट जितना दूर संभव इजी और फैसिलिटेट करना चाहिए हमें। हम कर की बात कर रहे हैं तो काफी स्टार्टअप्स जो हैं वह भारत में नहीं रजिस्टर होकर सिंगापुर या कोई ऐसे टैक्स जुरिसडिक्शन में जाके रजिस्टर होती हैं जहां पे कर का दर कम होता है। कई जगहों पे या तो उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है या 2, 4, 5% कर देना पड़ता है। हालांकि हमने 15% जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अनाउंस किया है टैक्स रेट, तो क्या यह संभव है कि हम इसको और कम कर सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए, या बजट में जो हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो हमें अलाउ नहीं करेंगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो प्रायोरिटी है वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही वे करना पड़ेगा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो किसके लिए वो ज्यादा देना चाहेंगे, स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा देना चाहेंगे। ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स है उनको उन्होंने ऑलरेडी एक टैक्स कट देकर रिसोर्स का एक उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा सा कम कर दिया है। तो स्टार्टअप्स को वो कितना ज्यादा देना चाहेंगे वो तो खैर वो लोग जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे कि वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ, तो वो बेहतर जानेंगी। लेकिन जो हायर इंसेंटिव्स आर ऑलवेज वेलकम, स्पेशली जो स्मॉल सेक्टर के लिए है। लेकिन और एक जो जरूरी मुद्दा है ये देखने के लिए कि जो इंडिया है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहे, वो है कि ये जो हमारे जो हम लोग जो इंसेंटिव्स देते हैं तो दे कम विद अ सनसेट क्लॉज, हाँ कि 3 साल तक। तो उससे भी ये देखा गया है कि उसके कारण भी मोर्टेलिटी रेट हमारा ज्यादा है। क्योंकि आज अगर मैंने एक उद्योग शुरू किया है, जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है टू गेट द इंसेंटिव्स, तो मैं कोशिश करूंगी कि किस तरह से इसको बंद करके शायद मैं और एक शुरू कर लूं। तो ये मोर्टेलिटी रेट का एक छोटा अंश इस वजह से भी है। ऑल शॉप्स हैव टू कम विद अ सनसेट क्लॉज। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा जो सरकार है उनको थोड़ा देखने की आवश्यकता है कि इसका टाइम थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, टू मेक द सेक्टर मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो एक टैक्स आप ऑलरेडी स्टार्टअप्स को मिल चुका है, तो और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स के लिए निकाले इस बजट 2020 में, आई एम श्योर द स्टार्टअप्स वुड रियली वेलकम इट। Big problems for MSME and vendors as a whole is that payments are often delayed by large companies, including public sector companies and government departments. At one point of time, one estimate was that the corporate sector is sitting on payments of 60,000 crore rupees, which has come down. How do you address this problem? How do you make the system more predictable so that this cash flow keeps going? Well, I think one way of addressing this very real problem is to make sure that there is greater transparency in the payment system. Right now, what happens is that particularly the payment that is delayed are where the government is the party that has not really made the payments. Now, at least from the government side, there should be a regular, transparent disclosure of payments that are being held up. What I believe is that even though the payments may have been released from a certain higher authority, but those payments are held up in the pipeline. We've had a very enriching discussion. What are the steps that may be needed to help MSMEs, which are a very vital clog in the economy? Thank you very much. Thank you. Thank you. You were listening to a discussion on pre-budget analysis on startups and MSMEs.
The participants were economic analysts A.K. Bhattacharya and Amiti Sen. Siddharth, journalist, initiated and moderated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website, newsonair.com. You can also follow us on the News on AIR app for updates. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com.